Welcome to my channel. New day with a new eye look. Hopefully you all will like it. As I explained in previous video, eye theory. Those who have not watched it yet, please check it out on my channel. I have applied two colors, rust and maroon, and whenever you mix two colors, make sure to blend it very well. And on brow bone area, I'll be applying a lighter shade like brown and peach to blend and hide the line which you can see on the brow bone area. आज मैं क्रिएट कर रही हूँ एक ब्यूटीफुल आई लुक, और जो मेरी प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं देखी, जो मैंने आई थ्योरी आप लोगों को बताई थी, आप मेक श्योर कर लें, उसको चेक करें और आप लोगों को बहुत अच्छे इन्फॉर्मेटिव आइडियाज़ मिलेंगे। और आज मैं रस्ट और ब्राउन को मिक्स करके ये मैंने आई लुक क्रिएट किया है। और आगे फिर चलते जाएं और देखते जाएं कि मैं क्या कर रही हूँ। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा। इसमें भी बहुत डिफरेंट टेक्निक्स हैं और न्यू टेक्निक्स जो मैंने ऐड ऑन की हैं वो आप अच्छे से देख लें, ठीक है। नाउ आई विल क्रिएट कट क्रीज टू लाइटन अप inner corner of the eye. So blend the lighter shade of concealer very well. I have applied liner before, so if you apply liner before, you have to be careful. Like I have, I have experience, so I can do easily, but if you do, be careful. इसके बाद मैंने आपको बता रही हूँ कि मैंने कट क्रीज किया, और जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से कट क्रीज किया मैंने। और अब मैं इसको लाइटन अप करूँगी थोड़ा सा, और वो मैंने कर दिया। और नाउ आई एम अप्लाइंग अ क्रीम, a little creamy shade on the eyelid to just give a different look. And on eyelid I have applied a glitter, copper color glitter. So I'm finishing up the liner to complete the eye look. And on the same this eye look, I have created another one. Now I'm applying a shimmery color, velvety color, to enhance the brow bone area and tear duct. It looks really nice, and it enhance the eye. So you can choose this eye look or the other one, which I have applied a white liner instead of this lighter line. I have applied a white liner. So अब आप पे डिपेंड करता है ये सारा कि आपको वो लाइटर शेड की लाइन अच्छी लग रही है या फिर ये डार्कर शेड की लाइन जो वाइट मैंने किया वो आपको अच्छा लग रहा है। इट्स ऑल अप टू यू विच आई लुक यू लाइक। जो भी मुझे दोनों ही अच्छे लग रहे थे, आपको जो भी अच्छा लगे और आप इसी तरह से कर सकते हैं। और एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों से कहूँगी, जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, आप उसको चेक करें। जो मैंने आई थ्योरी आप लोगों को बताई थी वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है बिगनर्स के लिए भी, कि आपको किस किस एरिया में डार्कर लाइटर और कैसे करने हैं, और बहुत अच्छा है। फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। खुदा हाफ़िज़।